Hello, dear friends. How are you? I hope all of you are fine. Today, we are going to learn a new topic, very easy topic to understand. Now, look at these pictures. What difference do you notice these two pictures? Here, parents are with their children. In the second picture, child is with parents. Dear friends, we must love our parents because our parents love us. This is a family. Do you know what is the difference between home and house? Yes, home and house are two different things. House is four walls and a roof over it. That is a place of living. But home is a house where family members live together, love each other, support each other, sacrifice for each other. They live together happily. This is called home. That's why we always call home sweet home. Appreciate your parents. You never know what sacrifices they went through for you. Isn't it a duty of every father, every mother to take care of his or her child? Yes, parents take care of their children. But my second question is that, isn't it a duty of every child to take care of his or her father and mother? Parents take care of us when we are small, but we have to take care of our parents when they grow old, when they become dependent on us. We have to support them physically as well as morally and mentally. Take care of your parents just as they took care of you. This is called family, loving family. Parents are the visible gods to their respective children. Honor your parents first. So today we are going to learn a very beautiful poem from second section of our textbook, Father Returning Home. Here in this poem, the poet describes a father who travels or commutes by Mumbai local train, crowding train. He is returning home from hard work. This beautiful poem is written by well-known Marathi poet in English, Dilip Chitre. Dilip Chitre is one of the most Indian writers and critics to emerge in post-independence India. He wrote in Marathi and also in English. He is also a painter and filmmaker. He was born in Baroda, Gujarat, and his family moved to Mumbai in 1951. He published his first collection of poems in 1960. Let us see about the poem, what the poem is about.
This is the poem taken from Traveling in a Cage, collection of poems written by Dilip Chitre. It draws a portrait of suburban commuter. इसका मतलब है मुंबई लोकल ट्रेन में से जर्नी करने वाला, सफ़र करने वाला एक मैन, आदमी, फादर, हार्ड वर्किंग पर्सन. It depicts the dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. You know that the people who travel by Mumbai local train is a very, very dangerous situation, very, very tough, and when you ask the people who travel by Mumbai local trains, their condition, their physical condition as well as mental condition, it is journey, it is very dull and monotonous, also exhausting and pitiable routine life of these people. This poem also describes forced alienation at home. Alienation means loneliness. You know that old people are always neglected by their families. Nobody wants to keep old people in their homes. But this is very, very sad, very pathetic. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father. When father comes home, he is very tired physically as well as mentally. He wants to share his days, his thoughts, his feelings with his children, but children are not in position to listen to him because their world is different from the world this old man lives in. As a result, he is forced to retire into solitude. Let us read the poem. This is a very beautiful poem. I'll try to read it for you. Listen to this poem, read it in mind or repeat it after me. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dim by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again, I see him drinking weak tea, eating stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. So this is a very, very pathetic poem about the hard-working father, hard-working old man. Let us see this poem in detail, stanza by stanza, line by line. My father travels on the late evening train. Standing among the silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. The poet says,
My father travels on the late evening train because he gets free from the work in the late evening and he has to travel by that train which is full of home-going people, home-going commuters, passengers. That's why as the train is full of passengers, he has to stand. There is no vacant seat. So standing among silent commuters in the yellow light, suburbs slide past his unseeing eyes. Means as the train runs forward, suburb का मतलब होता है छोटे शहर, उपनगर, बोरीवली, कांदिवली, Malad, these are suburbs of Bombay. That is Mumbai. His unseeing eyes means everything passes or everything just moves behind. His eyes are seeing, but only eyes are open. He cannot see them. His mind is elsewhere. वो उसकी आंखें खुली है, उसको दिखता है ये मालाड गया, गोरेगांव गया, बोरीवली आएगा. इसका मतलब ये सब दिखता है लेकिन ये नहीं, इसको नहीं दिख रहा है. His eyes are open, आंखें खुली है, because mind is working, mind is thinking about his home, his children. His shirt and pants are soggy, कीचड़ से भरी हुई उसकी शर्ट, pants and his black raincoat stained with mud. कीचड़ से भरा हुआ उसका रेनकोट है ब्लैक कलर का. His bag is stuffed with books. उसकी बैग में किताबें है, खचाखच भरी किताबें. Is falling apart. इसका मतलब इतनी भरी हुई बैग है तो बुक्स बाहर आ रहे हैं. His eyes dim by age. उसको दिखता नाही, त्यांचे डोळे अंधुक झालेले आहेत. His eyes are dim by age, fade, निस्तेज झालेले आहेत. Homeward through the humid monsoon night. अभी अंधेरा हो रहा है, मानसून सीजन चालू है. उस मानसून नाइट में इसकी आंखें कमजोर हो गई है, कुछ दिखता नहीं है. Now I can see him getting off the train. राइटर बोलता है मैं उनको देखता हूँ. He is coming out of that train when the train stops at the station. He gets down from that train. लेकिन बाहर निकलता है कैसा देखो, like a word dropped from a long sentence. इतने लोग हैं और इतनी लंबी ट्रेन है. ट्रेन से बाहर आते हैं पिताजी, लेकिन कैसा, जैसा he comes out like a word dropped from a long sentence. एक मोठं सेंटेन्स, मोठं वाक्य आहे आणि त्याच्यातून एक छोटासा शब्द बाहेर पडतो. अगदी तसा हा पॅसेंजर बाहेर पडतो. अँड ॲज सून ॲज ही कम्स आउट he hurries across the length of this grey platform. He is in hurry to go home because he is too tired to stand there or wait for anybody. He has to go home, take a wash and rest in peace. Crosses the railway line, enters the lane. As he comes down on the platform, and he crosses the platform, he has to cross the railway line and he enters the lane, small lane into which his house is located. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. His body is full of mud. त्याचं चप्पल, त्याचा ड्रेस चिखलाने भरलेला आहे. But he doesn't pay attention. Even if he notices them, but he doesn't pay attention, he doesn't care because he has to go home as quick as possible. Home again, I see him drinking weak tea. घर में आते हैं, चाय कैसा मिलता है? Tasteless, sugarless, weak tea. Eating a stale chapati and reading a book. Look at the condition. Father has to eat stale chapati and he is reading a book to pass the time. बासी चपाती, शिळी चपाती त्यांना खावी लागते. त्यांच्या घरात कदाचित सुनबाई असेल, मुलं असतील. ती मुलं इतकी केअरलेस आहेत
इतकी रूड आहेत, दैट इज स्टोन हार्टेड अपन त्याला बोलतो, उनका दिल पत्थर का है. पिताजी को बासी खाना, यस्टरडेज मील, यस्टरडे चपाती दे गिव, and he has to read the book because though there is a television in the home, small children, his children and grandchildren do not allow him to watch or mix up with them. उनके साथ बैठने नहीं देते. He goes into the toilet to contemplate. पिताजी टॉयलेट में जाते हैं क्या करने के लिए? टू थिंक अबाउट हिज पास्ट लाइफ. पिताजी टॉयलेट में जाते हैं बिकॉज टॉयलेट इज द ओनली प्लेस फॉर हिम विच इज लोनली, क्वाइट एंड प्रॉपर प्लेस फॉर कंटेम्पलेशन, फॉर थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ. व्हाट डज ही थिंक? वो क्या सोचते हैं? Man's estrangement from a man-made world, man's loneliness from man-made world. अरे माणसाने माणसासाठी निर्माण केलेलं हे एकटं ठिकाण, एकाकी ठिकाण. Look at this is a world, this is a concrete world full of people. Still it is a lonely place for some people, especially old people. वृद्ध लोकांसाठी हे कॉन्क्रीटचं शहर, हे आधुनिक जग अत्यंत अत्यंत वाईट आहे. कारण त्यांच्यामध्ये कोणी मिक्स होत नाही, त्यांच्यासोबत कोणी बात करत नाही, बोलत नाही. नवी पिढी, तरुण पिढी आपल्या जगामध्ये मशगूल असते, मग्न असते, एन्जॉय करत असते. बट दे डू नॉट हॅव टाईम टू लिसन टू द कंप्लेंट्स और प्रॉब्लेम्स ऑफ ओल्ड पीपल. He comes out and he trembles at the sink. वॉशरूम के मतलब जो जहाँ वॉश बेसिन है वहाँ आता है तो हाथ उनके ऐसे कांपते हैं. His hands trembles. The cold water running over his brown hands, his dirty hands, he tried to wash them. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. As I told you, मैंने पहले ही बताया, बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रहकर कुछ उनकी भावनाएं सुनना नहीं चाहते, उनकी प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहते, बिकॉज देयर वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ दीज ओल्ड पीपल. लहान मुलांना किंवा तरुण पिढीला वाटतं हे कबाब में हड्डी है. अरे पण ज्या आईवडिलांनी तुम्हाला लहानचं मोठं केलं त्याच आईवडिलांना म्हातारेपणी तुम्ही दुःख कसं काय देतात? देऊ नका दुःख. ते लहान मुलं आहेत. ज्या वेळेला तुम्ही लहान होतात त्यावेळेला त्यांनी तुमचा सांभाळ केला. आता म्हातारपणी जसे काही ते लहान मुलं आहेत, तुम्ही त्यांचा सांभाळ करा, त्यांच्या भावना समजून घ्या. उनको इग्नोर मत करो, उनको परेशान मत करो. बट हियर young people are not ready, or they are not ready to get mixed up with these people. They do not tell their jokes, their feelings, their experiences to these old people. इधर भी है, ये पिताजी दिन भर काम करके घर पे आते हैं लेकिन कोई उनकी ख्याल नहीं रखता. That's why after eating, after dinner, he has to go to bed. Now he will go to sleep. उधर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो क्या करेंगे वो? लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग. स्टैटिक मतलब हिसिंग साउंड, रेडियो साउंड. अभी भी वो रेडियो सुनते हैं क्योंकि उनको टीवी मिलता ही नहीं. टीवी पर प्रोग्राम है वो बच्चों को पसंद है, बच्चे टीवी छोड़ते ही नहीं. एंड ऑल्सो लिसनिंग टू दैट म्यूजिक एंड जस्ट ड्रीमिंग, थिंकिंग अबाउट पास्ट लाइफ. उनका गया हुआ भूतकाल, बीते हुए भूतकाल के दिन, अच्छे दिन वो याद करते हैं. ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ड्रीम करते, सपने में क्या देखते हैं? हिज एंसेस्टर्स मतलब फोर फादर्स, दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी. वो फोर फादर्स, प्राचीन ज्यांचे मागचे जे पूर्वज आहेत
त्यांचा विचार करतात, त्यांच्या नातवंडांचा, अँड थिंकिंग अबाउट दी चिल्ड्रन, ग्रँडचिल्ड्रन ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग सबकॉन्टिनेंट थ्रू ए नॅरो पास. जणू काही एक प्रकारची ही भटकी जमात त्यांच्या घरामध्ये आली, त्यांच्या आयुष्याचं, संपूर्ण आयुष्याचं नुकसान केलं. ही नातवंड, ही मुलं आली, जोपर्यंत ही माणसं एकटी होती, आनंदी होती, आता मुलाबाळांनी घर भरलं, आता अजून आनंदी व्हायला पाहिजे. बट नो, दे हॅव बिकम व्हेरी व्हेरी सॉरोफुल, व्हेरी व्हेरी अनहॅपी. See, these pictures come in their mind. नोमैड्स का मतलब होता है भटका समाज, इधर से उधर जाने वाला. Now we are going to see some figures of speech in this poem. मुलांनो, तुम्हाला पुन्हा एक सजेशन आहे. जेव्हा जेव्हा प्रत्येक धडा किंवा कविता तुम्ही शिकतील, समोर नोटबुक ठेवा, हा व्हिडिओ पॉज करा आणि त्याच्यातले सगळे महत्त्वाचे फिगर्स ऑफ स्पीच असतील, पॉईंट्स असतील, परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. प्लीज नोट डाऊन ऑल दीज इम्पॉर्टंट पॉईंट्स गिवन इन ईच व्हिडिओ, ईच स्लाइड ऑफ ईच व्हिडिओ, because they are for your final exam. Study them. If you do not understand the video, listen to the video, watch this video again and again. So let us see figures of speech covered in the poem. Now look at the line. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. आपने देखा है, I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. जो फादर ट्रेन से बाहर आते, उसकी कंपैरिजन कैसी की है, किससे करती है, जैसा एक बड़ा सेंटेंस है और सेंटेंस में से एक वर्ड बाहर आता है, और एक वर्ड भी इधर यूज किया है लाइक. जब दो ऑब्जेक्ट्स लाइक, एज, सो एज से कंपेयर किए जाते हैं, मालूम है पहले पोएम में मैंने दिखाया आपको, वो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. हियर गेटिंग द फादर ऑफ द ट्रेन is compared to a word dropped from a long sentence. So when two objects are directly compared by the words like, as or so as, the figure of speech is called simile. Now next, man's estrangement from a man-made world. Here alliteration, the consonant sound m is repeated, man-made world, m, repetition of consonant sound. This figure of speech is called alliteration. Listening to the static on the radio. Static is a hissing sound, and the figure of speech onomatopoeia. The word static indicate the hissing sound of the radio. There is a spelling mistake. The word static indicates, S should be there, indicates the hissing sound of the on the radio. इसका मतलब है अगर साउंड एक्सप्रेस करने वाला, साउंड इंडिकेट करने वाला वर्ड जिस लाइन में है, वो लाइन फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमेटोपिया. देखो, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स पूरा लिख डालो, क्योंकि इन योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पोएट्री क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 4 मार्क के लिए एप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. सो एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, द फर्स्ट पॉइंट है द टाइटल. द टाइटल फादर रिटर्निंग होम इज अबाउट अ सर्टन इंडिविजुअल, अ कम्यूटिंग फादर रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क in the Indian city of Mumbai. This is title. Then theme, the central idea, the painful loneliness of the hard-working father. It is a symbol of man's isolation, that is loneliness, from the materialistic man-made world. ये theme है, ये materialistic world है. भौतिक जगात माणसाने माणसासाठी निर्माण केलेलं हे जे जग आहे, त्याच्यामध्ये माणूसच माणसापासून वेगळा पडला. आदमी आदमी से अलग हो गया. एस्पेशली ओल्ड पेरेंट्स, दे फील लोनली इवन इफ दे आर
among, or they are surrounded by a crowd. What are the poetic devices used in the poem? The poetic devices, that is figure of speech used in this poem, are simile, alliteration and onomatopoeia. They are important figure of speech. Appreciation of the poem में next point है rhyme scheme. What is the rhyme scheme here? It is a free verse. There is no set of rhyme scheme. Rhyming words नहीं है, rhyme scheme नहीं है. Next poem में rhyme scheme रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा. ये poem is a full of, मतलब बिना rhyming words है. It is a free verse. No rhyming words are used. No rhyme scheme is given. What is the language and style used by the poet or mood of the poem? The poem is written in pessimistic and monotonous mood. Father is not optimistic, he is pessimistic. निराशावादी बन गए पिताजी, कंटाळवाणा बनलेला आहे. त्यांचं जग पण अत्यंत हार्डवर्किंग, टायरिंग आणि लोनली आहे. म्हणून लँग्वेज आणि स्टाईल आणि मूड अत्यंत बोरिंग आहे, मोनोटोनस आहे. What message does the poem give to you? ये मैसेज क्या मिलता है? द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट इग्नोर द ओल्ड पेरेंट्स. दे शुड बी गिवन मोरल सपोर्ट एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. वी शुड गिव सम टाइम टू शेअर देअर फिलिंग्स विथ अस. लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं, लहान मुलांचं जास्त लाड केला जातो, पण म्हाताऱ्या माणसांकडे कोणी लक्ष देत नाही. ह्या कवितेतून असा संदेश निघतो की वी शुड नॉट इग्नोर ओल्ड पेरेंट्स. म्हाताऱ्या आईवडिलांकडे दुर्लक्ष करायचं नाही. उनको मोरल सपोर्ट देना है. एक साथ रहते हम लोग, हम साथ साथ है, ऐसी फीलिंग उनके मन में आनी चाहिए. वी शुड गिव सम टाइम टू शेयर देयर फीलिंग्स विथ अस. उनकी कुछ एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, कुछ भावनाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, हम सुनना चाहिए. हम लोगों ने we have to take care of them. हम लोग उनकी बातें सुननी चाहिए, उनको टुगेदरनेस की फीलिंग आनी चाहिए. और उसमें लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, योर ओपिनियन. लेकिन आप आंसर में लिखेंगे माय ओपिनियन, मेरा मत, मेरा ओपिनियन क्या है. सो आई थिंक द पोएम अर्जेस और रिक्वेस्ट्स टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स. वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द हार्ड वर्क done by our old parents. We have to treat them lovingly and with care. Underestimate का मतलब उनको कम नहीं समझना चाहिए. हम बोलते हैं बूढ़े लोगों को, नहीं तुम, आप दादी या दादाजी आपको कुछ नहीं समझता, हमारा वर्ल्ड अलग है, हम अलग है, हम आपसे सुपर है. बिल्कुल नहीं है. अरे आप क्यों है? आप जिंदा है उनकी वजह से. उन लोगों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है. अब वो बूढ़े हो गए, उनको सपोर्ट देना आपकी ड्यूटी है. सो दिस इज योर ओपिनियन. देखो, माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनका आधार आप है. आप उनको लेके जाना चाहिए जिधर उनको जाने का मन करता है उनका. या सपोर्ट देम, प्लीज सपोर्ट योर पेरेंट्स. Thanks for watching this video. Please, this is very important, interesting but pathetic poem which talks about difficult, hard life of old people. लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम हमारे माँ बाप को संभालेंगे लास्ट दिन तक, उनके लास्ट आखिरी सांस तक हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे. बिकॉज दे हैव टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर अस. ये पोएम सुनने के लिए धन्यवाद. Wait for the next video. Bye bye.